Hello, my dear friends. You are going to learn some important topics like cells and what are there inside in the cell, organelles, chromosomes, and genes. So these are the topics that we are going to discuss in this class. So let's start. Hoping that everything is alright. So we will start from the basis of life. The basis of life. So as we know that life is regarding to organisms, and organism essentially from when we talk about the basis, so definitely that is cell. So cell basically comes from cella, which is a Latin word, and that's mean small room. Small room. And the study of cell is called cytology. It's a branch of biology, sub-unit of biology. Now, cell, in more technical words, cell is the functional, structural, and biological unit of life. ये फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, बायोलॉजिकल भी है. कैसे आगे जाके पढ़ेंगे. In other words, we say that building blocks of life. You can also say, in simple words, cell is a building blocks of life. Cell, for the first time, it was discovered by Robert Hooke in 1865. 1865 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था for the first time. Okay. Now, on the basis of division, it can be, cell can be single, or it can be more cell. It can be more cells. Okay. So, for example, if we talk about single cell, so single cell, like we have bacteria or yeast. These are single cell organism. So in this sense, they are complete organism, right?
And in other words, we also say it is prokaryotes. As we are going to discover this area later on, it is also known as prokaryotes. When we have more cells, okay, so in this sense, it functions some special as they as we have some example like we can also say in other words that they are eukaryotes are multicellular, and besides in eukaryotes we have unicellular organism as well. Okay, now let us differentiate between eukaryotes and prokaryotes. So I have provided you some images for your convenience here. So prokaryotes, if we start from it, prokaryotes, it has or they have nucleus, membrane bound wall, right? So in prokaryotes, these things are absent. They are absent. While they have cell wall, but they are made up of specialized carbohydrates, and that is called peptidoglycan. Peptidoglycan. These are polysaccharides. Polysaccharides, right? While on other side we have eukaryotes. So eukaryotic cells are 10 times of the size of the prokaryotes. They have nucleus, they have membrane bound organelles inside the cell. They have DNA complex which is found in nucleus, and its growth is conducted by cell division, particularly mitosis. Okay, so if we talk about compositionally, so they are made up of carbon-containing compounds, both. Either it is a eukaryote or prokaryote, but they are made up of carbon-containing compounds besides water, which uh, consist of around 70% by mass. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें of the cell, not structure, characteristics. Okay, we will going in a while there, but let us before talk about its characteristic. So characteristic, it support to body of organism.
characteristics. Okay. In properties of both cells structure that support to the body of organism, एक तो ये सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक हो गया, and its nucleus holds genetic information for reproduction and cell growth. ये जनरली सेल्स के characteristics हैं. And this nucleus, which holds genetic information, facilitate growth, especially mitosis process. It also allows transport of materials, also produce energy. Besides, it aids in reproduction. तो ये इसकी कुछ खासियत थी. Now, what are the components? What are the components? So components include the cell membrane. Here in this eukaryotic cell, you can see here the outermost boundary of this cell is cell membrane. As we are talking about eukaryotic cell, keep in mind the nucleus here, this surround circular body, it the center of this nucleus. This is center of this eighth cell. This is nucleus. While the distance between this nucleus and outermost boundary, that is cytoplasm. Okay. And then within the cytoplasm, you see a lot of intricate arrangement of fine fibrous structures, whether this one or this one or this one or this one. So they are all the components of cell which are located in cytoplasm, and they are called organelles. Each one has distinctive features regarding function, structure, and composition. Okay, so now let's talk about cytoplasm. So cytoplasm, a semi-liquid non-nuclear portion of cell between nuclear plasma membrane or cell membrane. You can also say cell membrane or plasma membrane. Both are the same name for one thing. So a semi-liquid non-nuclear portion of cell between plasma membrane and nucleus. As I told you already, so this area, this is the nucleus and this is the plasma or cell membrane. So the area between these two things is called cytoplasm, which is semi-liquid and non-nuclear portion. Its function include
is it got bigger area as compared to the nucleus, so it is a medium for movements of these organelles. One, number two, metabolic activity site. A lot of metabolic processes are happening here, like glycolysis, glycolysis, the preparation of carbohydrates. Okay, that is called glycolysis. It also acts as a storage house, right? So these are some of the function of cytoplasm. Now coming to the nucleus. So this is the nucleus. So we are going to discuss this nucleus in detail. So nucleus, let me write it here. As you know, nucleus is a control center of a cell, and it lies uh, in the center of cell. Okay. Now, it was discovered by Robert Brown in 1831. It is a double layer membrane. So this nucleus is a double layered membrane. The boundary of this nucleus is made up of double layer, and it is mainly found in eukaryotic cell. As we already discussed, the prokaryotic cells have no nucleus. Okay. Now coming to discuss its important components, like we have within the nucleus, we have nuclear membrane, and nuclear membrane is the outermost outer boundary, or in other words, it has to, as we already discussed, that it is a double layered membrane. Okay, so it can be outer or inner membrane. It is a porous for exchange of material. For exchange of materials. Another important component within the nucleus, that is nucleoplasm, and it is a soluble nuclear safe, a soluble nuclear safe. Another one, we have Nucleolus. It is a borderless darky stained darky stained body that apartheid
nuclear membranes, apoptoid nuclear membrane. So here, this is, it is already mentioned. So this is Nucleolus, and it is a borderless. Mainly, it is a dark body. It has no border, right? The function of this darky body, let me write it here. That is, it works as a synthesis and stores R RNA. R mean ribosomal. The RNA which is attached to ribosome, the one of the organelle of the cell. That is called rRNA. It also acts as cellular activities. I mean facilitate and provide medium for reproduction. All right. So we have discussed the nucleus and its components within it. Now we are going to discuss in detail, and that is chromosome. So here you see this is the structure of chromosome. So chromosome is a crucial role, has a crucial role in determining the sex of an individual. Okay, and in technical way, we say it is a thread-like structure made of protein and a single molecule of DNA, passed from parent to offspring. So as you see here, these are chromosomes. So chromosomes are a thread-like structures, and they are mainly composed of a protein and a single molecule of DNA, right? So DNA contains the specific instruction that make each type of character unique. DNA में कुछ खास इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हर बंदे की यूनिक कैरेक्टर बनाते हैं. So that is the responsibility of DNA, right?
Now, its structure. If we talk about its structure, so its structure is wrapped up many times. But before that, let me tell you here, this is a single chromosome body. Okay, so the center are a body which holds both the ends and called telomere and telomere. Okay, which holds both holds and control. That is called centromere. Right? And both are chromatide. So here we have this DNA like this one. So DNA is wrapped many times. ये ट्विस्ट करते हैं many times twist करते हैं around lots of protein. जब ये ट्विस्ट करते हैं lots of protein की गिर्द ये मतलब क्या हो जाए wrapped up होते हैं तो क्या बनाते हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ठीक है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स जब डीएनए लॉट्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन के लिए पेस्ट हो जाती है रेप्ट अप होती है ठीक है स्पून लाइक ठीक है and they when they again wrapped up फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स ठीक है Histones are the simple form of wrapped up protein around lots of protein. While when they wrap up again from those lots of protein many times, so they create other structures, and they are called nucleosomes. अब इसमें तो चीज़ नहीं है लेकिन कुछ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ से When again these nucleosomes coil up tightly. When these nucleosomes coil up tightly, so they create chromatin networks or loops. ठीक हो गया You can imagine from this sequence from here to here, these are chromatin loops. While here, let me draw the structure. Let's suppose this is a thing or a coil on which DNA structure are wrapped up so many times. So this is histones, right? When many histones like this is another and this is another histone, DNA wrapped up, and then again histones, another, and it goes the same way. Then these structures are called nucleosomes, and when nucleosomes coil up tightly, ये जब और ज़्यादा tightly
पेस्ट करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो कुछ इस तरह चीज़ें बनते हैं, ये वाला, ठीक है, जो आगे जाके क्रोमोसोम में गायब हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, ये वाला, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक हो गया, ये तो इसके स्ट्रक्चर था। And now chromatin loops again wrapped up around each other, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, दोबारा से wrapped up होती है ये chromatin loops जो है ना, ये वाला, ठीक है। तो क्या बन जाते हैं, हमारे पास आ जाती है फुल क्रोमोसोम, जिसकी शक्ल या स्ट्रक्चर की बात हमने पहले की। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। This is the body and these are the ends, telomeres, and these are centromere. Okay. ह्यूमन के तकरीबन 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, ओके, जो 46 मुकम्मल होते हैं। इसमें जो है ना 1 पेयर जो है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, और वो क्या है, वो या तो XX जो फीमेल recognition है, while it can be XY just male content। एक पेयर तो इसकी तरह, बाकी जो 22 पेयर थे ह्यूमन के 22, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो नेचुरल है उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह चिंपैंजी की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम की, चिंपैंजी उसके तकरीबन 48 क्रोमोसोम है। ऑनियन की अगर हम बात करें, इसकी 16 है। प्राग की 26 क्रोमोसोम, पेयर की बात करता हूँ, पेयर होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था क्रोमोसोम। आगे वी हैव जीन्स। What exactly genes are? Genes, they carry the information that determines individual traits or characteristics। जीन्स में ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन होती है जो एक इंडिविजुअल की ट्रेट्स बनाती है, तबीयत, मिजाज, एटीट्यूड, ये बनाते हैं, ये उसकी जीन्स की वजह से होते हैं। सो अ जीन इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए, ये डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। एक तो डीएनए हो गया ना, डीएनए जो है मुख्तलिफ तरीकों से ट्विस्ट करते रेप अप होती हुई आखिर में क्रोमोसोम बनाती है। और ये जीन जो है ना, इट इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए that contains instruction for specific molecule like protein। ये प्रोटीन बनाती है। आगे जाके प्रोटीन जो है ना मुख्तलिफ सतह पे इंडिविजुअल में
काम करते हैं। That contains instruction for specific molecule like protein with the genome। अब जीनियम क्या चीज है? जीनियम जो है ना, ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम जीनियम कहते हैं, जो जीन से निकला है। और जीनियम जो है ना, और जीनियम कंसिस्ट ऑफ around 3 billion base pair, 3 billion base pair जो कंप्लीट सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ये तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर पे मुश्तमिल होती है, जो कंप्लीट करते हैं आगे जाके। एंड दे आर पैक्ड इनटू 23 फेज ऑफ क्रोमोसोम। ये इस तरह पैक्ड अप होती है कि आगे जाके 23 फेज ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसको हम फिर आगे जाके DNA क्रोमोसोम में हमने ये बात की है। एक और टर्म हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एलील। एलील जो है ना, ये एल है। एलील डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम एलील कहते हैं, ALLEL। अब फंक्शन की तरफ आते हैं, तो फंक्शन ऑफ द जीन via gene instruction or gene expression, जीन एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं एक प्रोसेस है, इसके थ्रू ये काम करते हैं। और ये क्या है? द इंस्ट्रक्शन इन आवर DNA आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल पार्ट। ठीक है, इसी के थ्रू जो है ना, जो इंस्ट्रक्शन है DNA में, इंस्ट्रक्शंस जो तकरीबन 3 बिलियन पे मुश्तमिल होती है बेस पेयर पे। ठीक है, इसी इंस्ट्रक्शन को DNA में क्या करते हैं? फंक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं। और फंक्शनल पार्ट क्या है हमारे पास? वो प्रोटीन है। ठीक हो गया। जब ये इंस्ट्रक्शन इन द DNA आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, so this process consists of two major categories. One is DNA conversion into mRNA. When DNA is converted into mRNA, mRNA is a single-stranded molecule, complex molecule, while DNA is double-layered or double-stranded complex molecule. This is deoxyribonucleic acid and this is ribonucleic acid. Okay, so this process is called ट्रांसक्रिप्शन। जब DNA से mRNA बनते हैं, M मीन मैसेंजर, जो कुछ इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं DNA से, इसको हम क्या कहते हैं? mRNA। दूसरा, जब mRNA क्या हो जाता है, इससे
प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड जो डिफरेंट 20 डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, और ये डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर प्रोटीन बनते हैं। याद करें, दो प्रोसेस मेन प्रोसेस में ये मुश्तमिल होती हैं। All human protein depend combination of amino acid with distinguished function. Okay. Now coming to the compartments of cell or organelles. One is mitochondria. It is a cell replicating body, a powerhouse भी कहते हैं इसको क्योंकि ये खुद एनर्जी बनाते हैं सेल के लिए। अब यूकारियोटिक सेल्स या यूकारियोट्स के लिए क्या है, ये पावर हाउस है। कंपोजिशन ये दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके दो टाइप्स होते हैं, या दो मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। इस एक को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो क्या है, स्मूथ होती है। एंड नंबर सेकंड दैट इज इनर, और ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्ड इन फोल्डिंग्स। और इस जब कंसिक्वेंटली इन फोल्डिंग्स की वजह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टे उसको कहते हैं। ठीक हो गया। सो फंक्शन जो है ना, ये पार्टिसिपेट इन Krebs cycle, aerobic respiration, fatty acid metabolism. गल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास है, या गल्जी बॉडी जिसको हम कहते हैं। ये गल्जी ऑपरेटर्स जो है ना, ये स्मूथ मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स वेसिकल स्टेक ऑफ सेक्स है, और उसी को हम सिस्टर्न भी कहते हैं, इन साइटोप्लाज्म। सो दे आर ऑल ऑर्गेनिल्स आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। Its function is cell secretion, transportation, particularly for protein and enzyme, and also work or facilitate the formation of glycolipids. Similarly, we have lysosome. So lysosome, in common words, it is called cell's suicidal bake because it helps in cell renewal and breaking down the old cell parts. सेल रेन्यूअल में काम में आते हैं सेल रेन्यूअल की, और जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट्स उसको ख़त्म करते हैं। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ बिनामियाज करते हैं, जैसे कि एक को हम कहते हैं फेगो साइटोसिस, और ये जो है ना, ये इनगल्पिंग फॉरेन मटेरियल,
बाहर से जो मटेरियल जाती है उसको इनगल्प कहते हैं और इसी फिनोमेना को हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं. Similarly, it also contribute in intracellular and extracellular digestion. ठीक हो गया. Intracellular and extracellular digestion में भी contribute करते हैं. एक और process just like above phagocytosis, इसको हम कहते हैं ऑटोपेगी. ऑटोपेगी जो है ना ये सेल्फ ईटिंग है, अपने आप को खाना. ये सेल्फ ईटिंग है. ये कुछ पार्ट्स है ये लाइसोसोम में होते हैं. इसको सुसाइडल वेग कहते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव ईआर endoplasmic reticulum, and they are the network of channels present in the cytoplasm of cell. इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो they are the site of storage. It is connected with nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस है सेल के अंदर उससे कनेक्ट होती है. Similarly, they are classified into two types. One is called rough endoplasmic reticulum, और ये राइबोसोम से अटैच होते हैं. राइबोसोम जिसको हम पहले बात की mRNA, RNA, राइबोसोमल RNA में हमने बात की इसकी. Another one that is smooth ER. ठीक हो गया. फंक्शन इसकी जो है ना ये वाला फंक्शन नहीं है बल्कि यह आप बात कर रही हैं. इसमें क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट like to support the shape besides maintain it. Also helps in transport of some materials, synthesis of protein, lipids metabolism, detoxification of drugs, and transmission of nerve impulses. ये कुछ काम है जो ER organelles करते हैं. Similarly, we have vacuole. Vacuoles are a storage center for food materials and waste product. ये क्या है? Storage center for food material and waste product. They are larger in plant but small and many in animal cell. Function: it stores wastes. It also contributes in metabolic intermediate. It also supports to plant cell. It creates rigidity in leaves and young plants. Ribosome. They are complex, tiny granule structures found within the cell of cytoplasm. They are freely dispersed in cytoplasm. It is also attached with ER as with
discussed earlier, astini, and one of its function is to prepare protein. In other words, they are also known as factories of protein synthesis. जिस जगह पे प्रोटीन बनते हैं उसको फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को. Now coming to another one, that is centrioles. Centrioles are cylindrical structures in animal cells, microorganism and lower plants. ये cylindrical structure होती है एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोअर प्लांट्स में. इसकी स्ट्रक्चर जो है ना माइक्रो 9 micro tubules are arranged nine microtubules arranged होती है, and then each of the 9 microtubules is further composed of 3 tubules. जो further हर 9 microtubules जो है ना फिर 3 अगले tubule से बने हैं. Another organelle particularly regarding plant cell, and that is plastids. So plastids, membrane bound pigment only in plant cell. Okay, इसके 3 main component है. इसको एक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, कलर प्लास्ट. ठीक है, प्लास्मीन जो photosynthetic activity करते हैं. So it is a photosynthetic green pigment. Stack of membranes combine to produce grana. Grana is a plural form of agranum. मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो कंबाइन होती है वो ग्राना बनाती है, और फिर जो है ना एक क्या अग्रानम, सिंगुलर ऑफ ग्राना क्या होते हैं, ये एटीपी. इसमें क्या होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होके जब इस पे क्या पड़ते हैं, सनलाइट, you can also say agranum produce ATP by catching or trapping sunlight energy. Okay. Similarly, next one, that is chromoplast. Again, color component, color to plant. It colors to plant other than green. Green के अलावा जो भी plants के कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं. ठीक है. It is existed in petals of flowers and ripened fruits. It helps in pollination and dispersal of seeds. Third and the last one, that is leucoplast. It is a colorless triangular shaped body in underground parts of the plant, like roots of the plant, and one of its major function, that is to store food in plants. So these are the topics we have discussed so far in today's session. So I'm going to wind up this